welcome back. So friends, here we were doing Goodwill in the last video. Goodwill, the concept you are clear with, I hope. Now, today we are trying to go into the methods of valuation of goodwill. Before we start with the individual methods, we are supposed to know this basic adjustment first, which will be applicable for all the methods. This is like the common thing. So यहाँ पर हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं? Calculation of normal, that is the adjusted profit. Normal profit, abnormal profit क्या होता है? Profit तो profit होता है ना? Now see, goodwill I told you is completely based on profits. Previous profits show me how much will be my future earnings, right? Now see, I am basing my future prediction on the past performance of the business. लेकिन अगर profits ही गलत होगा तो मेरा future prediction भी wrong हो जाएगा ना? So here it is very important that when I am trying to calculate goodwill of the firm, my profits are absolutely correct and they show me that clear image कि आगे कैसा scene रहेगा, right? So this thing to get clear with this, we need to make certain adjustments here. Certain adjustments मतलब क्या? जो profit दिया हुआ है particular year का, पिछले साल का, उसके पहले का, जितना भी जिस भी साल का दिया है और जिसके बारे में कुछ special points mentioned है, I need to take that into consideration. For example, I start with the profit of a past year. Suppose last year there was an abnormal loss, ठीक है, loss by fire. अब ये loss by fire हर साल तो होने का चीज है नहीं, abnormal incident है, कभी हो गया. We obviously debit the abnormal loss to the profit and loss account. It is charged, it's an expense to the firm, loss to the firm, but this is not a regular loss. ये regular expense नहीं है, regular activity से होने वाला loss नहीं है. So this is considered abnormal. Future में अगर मैंने इसको नहीं एडजस्ट किया अभी तो फ्यूचर के प्रॉफिट्स मुझे कम दिखाएंगे, राइट? आई विल बी प्रेडिक्टिंग अ लेसर प्रॉफिट इन द फ्यूचर, व्हिच विल बी रॉन्ग. आई नीड टू ऐड बैक दिस एबनॉर्मल लॉस दैट आई हैव चार्ज टू कैलकुलेट दिस प्रॉफिट, राइट? प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किए थे? ऑल इनकम्स प्लस माइनस ऑल एक्सपेंसेस. तो ये भी एक एक्सपेंस माइनस किया था, एंड दैट इज हाउ आई अराइव्ड एट दिस प्रॉफिट फिगर. So I add back this abnormal loss to get the correct profit. Alright? Same way, any expense which is not related directly to the operations of the business, day-to-day activities, abnormal है, non-recurring है, जो हर साल नहीं होगा आगे में, फ्यूचर में भी, तो वो सबको हम add back कर देंगे because वो फ्यूचर में नहीं होने वाला है. My objective is to predict the future based on past. So इसको करेक्ट कर देते हैं. Overvaluation of opening stock. Opening stock we debit to trading account. It's an expense. अगर उसको overvalue कर दिया हमने जरूरत से ज़्यादा, मेरे profits कम हो गए होंगे. So I need to add back that overvalued figure. Same thing, undervaluation of closing stock. Closing stock credit side में आता है, right? तो credit side में आने वाला income side वो अगर अंडर वैल्यू हो गया है मतलब मेरे प्रॉफिट्स कम हो गए. सो आई नीड टू ऐड दैट बैक. नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस जो आगे नहीं होना है, एडेड बैक. कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू क्विकली रिफ्रेश योर मेमोरी. कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कैपिटल वो है एसेट्स, मोस्टली बिग वन टाइम एक्सपेंडिचर. अगर उसको गलती से रेवेन्यू में डाल दिया है तो वो गलत है, इट्स नॉट अ रेगुलर एक्सपेंस, एडेड बैक. ठीक है? So basically any expense which is not related to the normal activity, abnormal activity है, abnormal loss है, और ये सब चीज रेगुलर बेसिस पे नहीं होने वाला है फ्यूचर, एडेड बैक नहीं चाहिए. Now let us see what do we have to subtract. अब जैसे abnormal loss हमने एड बैक किया, अगर कोई abnormal gain हो गया होगा तो किसी एक पर्टिकुलर ईयर में अचानक से कुछ ऐसा इनकम आ गया जो आगे नहीं आएगा, वन टाइम है, गलती से हो गया, luck by chance. So that kind of profit needs to be added back.
So here any abnormal gain has to be added back. Same thing, profit on sale of fixed assets. ये मेरा रेगुलर बिजनेस नहीं है, हर दिन प्रॉफिट कमाना फिक्स्ड एसेट्स बेच के. So that's not a regular income for me. Subtract it. The way we have added loss on sale of fixed assets. अगर फिक्स्ड एसेट्स बेच के कोई लॉस हो रहा है तो ये मेरा रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, उसको मैंने ऐड बैक कर दिया, प्रॉफिट को मैंने माइनस कर दिया. सेम थिंग विथ ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक. एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ दैट. Income from non-trade investments. Non-trade investments are those investments जब मेरे पास सरप्लस पैसा है, मुझे पता नहीं है, अपने बिजनेस में नहीं लगा रहे हैं, हम आइडल पड़ा हुआ है, चलो कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं, रिटर्न्स आएंगे, वो है नॉन-ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स. तो वो पैसा मेरे बिजनेस में लगा ही नहीं है, उससे मुझे इनकम आ रहा है. वो वाला इनकम मेरा इनकम थोड़ी है. I haven't generated that income. That's not the firm's हार्ड अर्न इनकम. नहीं, वो किसी और का इनकम है, सोर्स है, यहाँ से मुझे इनकम मिला है. Delete that. That is not of the partnership, right? And we are trying to project goodwill of the partnership, right? पार्टनरशिप फॉर्म जो एक्टिविटीज कर रहा है उसके हिसाब से जो प्रॉफिट आ रहा है वो उसका प्रॉफिट है. लेकिन ये तो हम कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, वहां से पैसा आ गया, मुझे इनकम आ गया. That is not related to my partnership activities, right? So this is not a trading income. इसको हटा दो. पार्टनर्स रेम्यूनरेशन या मैनेजमेंट कॉस्ट. अब अगर ये बिजनेस कोई और टेक ओवर कर लेगा, जो पार्टनर्स मैनेज कर रहे थे, तो उसको तो किसी और को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, जो सैलरी रेम्यूनरेशन वो उसको देगा, वो भी तो उसका एक एडिशनल खर्चा हो जाएगा ना. सो दैट ऑल्सो हैज टू बी टेकन इनटू केयर बिकॉज दैट विल ब्रिंग डाउन द फ्यूचर प्रॉफिट्स. So we are subtracting the partner's remuneration or any other management cost. Any probable future expense जो अभी तक नहीं हो रहा था, आगे करना पड़ेगा. अगर ऐसा कुछ predictions है, तो that will obviously bring down my profits. That should, because it's an addition to the expenses. So that I will subtract. So if I adjust my profits with these things given in the sum, I will be able to arrive at my adjusted profit. या normally जो हम normal activities से income हमारा होगा, profit होगा, firm का, right? So that brings us to adjusted profit. This is very important, pertinent to all the methods of valuation of goodwill. So that's why we discuss this here. Also, one more important aspect is years of purchase. अभी basically हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा ऐसा इतने साल में इतना अच्छा प्रॉफिट्स हुआ है फर्म को, तो आगे भी होगा. लेकिन कितने साल तक होगा, एक लिमिट है ना. एक गुडविल, एक रेपुटेशन कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड होगी. इफ आई एम परचेजिंग अ रनिंग पार्टनरशिप फर्म, दे हैव अ गुडविल, आई नीड टू पे देम फॉर द गुडविल बिकॉज व्हाई, ये जो फर्म हम टेक ओवर कर रहे हैं, this will be able to generate this level of profits for certain number of years, isn't it? That is not my hard work, it is their hard work, the firm's hard work. ठीक है, तो उसके लिए मैं बोल रही हूँ कि I am predicting कि next 3 years तक इसी level of income में चलेगा. See, this is very subjective. I can say 5 also, I can say 2 also. ठीक है, but this is a subjective evaluation. Again, this is a valuation of goodwill, not purchased goodwill. Remember? So valued goodwill में थोड़ा judgment, थोड़ा perception, थोड़ा all those estimates come into picture. So if I am saying next 3 years तक वो same level of profits can be sustained, so when I calculate the profits, I will multiply that profit with number of years of purchase to value goodwill. Okay, and that will be discussed in the next formula, in the first method. Alright, so this is the first sum we are taking. The sum says Sita and Geeta need to value goodwill of the firm on Ram's admission based on the last 4 years average profits at 2 years purchase of it. So first thing, we need to value the average profits. Profits of the last 4 years are given, out of which in 2019, 31st March 2019, we can also see a loss of 55,000. And other adjustments are given here. Firm had an abnormal gain of 10,000 in year 16-17. There was a loss by fire worth 20,000 in 17-18.
and repairs to car amounting to 50,000 was debited to vehicles account on 1st April 2018. Depreciation was charged on vehicles at 10% per annum on straight line method. Opening stock in the year 1718 was overvalued by 15,000. Calculate goodwill. So let us take this sum. The sum, I have read it out to you. The sum says we need to value goodwill by using simple average profit method and at 2 years purchase of average profit. ठीक है? So now average क्यों लेते हैं? सबसे पहली बात, last 4 years का average लेके क्या फायदा? Last year के profits को क्यों नहीं base बना ले रहे? Right? Now here averaging out मतलब finding out the level of profits, general level of profits. किसी साल में ज़्यादा हो सकता है, किसी साल में थोड़ा कम हो जाएगा. It keeps fluctuating. Like profit is not fixed. Therefore, we need to find the average for a few years so that we find a justifiable figure for the profit to be based on. ठीक है? So goodwill ऐसा profit पे लेंगे जो sustainable है, बहुत ज़्यादा बहुत कम, और fluctuations को हम average out कर रहे हैं, average लेके. Okay? So now this method tells you to average. लेकिन first thing we need to correct the profit. Profit सबसे पहले correct करना, उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं. ठीक है, उससे पहले एवरेज नहीं ले सकते. Okay, so going by the sum, now we have made a small table here. Years I have written. Please be very careful about the years. किस year में क्या adjustment हो रहा है, यहीं पे students गड़बड़ कर देते हैं. So please, I'm telling you in advance. Please, try to put the relevant figures in that particular place. 2016, 17. 17, 18, 18, 19, 19, 20. These are the 4 years given. Now the profits that were given, I have put it in the beginning. There is a loss in the third year, so I put it in bracket. So that add or less वैसे ही करेंगे जैसे कर रहे हैं. Okay? Now, there was an abnormal gain in 2016-17. That would have affected my profit of 70,000. Abnormal gain हुआ था, मतलब profits बढ़ गए थे. Abnormally, let us bring it down to normal. So we'll subtract this 10,000 of abnormal gain. इस साल का profit ठीक हो गया यहाँ पे. Then there was an abnormal loss of 20,000. Loss by fire abnormal loss है. किस year में हुआ था? 17-18 में, right? So ये इस साल का profit कम कर दिया था. ठीक है? So now let us bring it back to normal. We need to add it back. समझ में आया? So now this we have added to this year's profit. Fine. Then repairs to car amounting to 50,000 was debited to vehicles account. अरे repairs है, general regular revenue expense है. We don't have to treat it as capital, right? We are not purchasing a new furniture, a vehicle. जो हमने उस पे repairs उस पे add कर दिया, no? It's a regular repairs. Should have been debited to profit and loss account. Okay? So, if it would have been debited, my profit would have gone down. Yes. So that is what I am doing here. Repairs to the vehicle is subtracted further. तो loss हुआ था, loss पे further loss हो गया और कम हो गया. मतलब loss बढ़ गया. Right? 55,000 loss हो रहा था, अब 50,000 और loss हो जाएगा because मैंने एक expense छोड़ दिया था. Correct? So this is done. Now, there's a related aspect to it. Depreciation was charged on vehicles at 10% per annum on straight line method. ठीक है? Per annum नहीं दिया है, so it doesn't make a difference because date of purchase of the vehicle is given to me or date of repairs is given to me, right? तो ये 1st April को repairs हुआ था, उस दिन मैंने vehicle account में डाल दिया, तो vehicles तो depreciate हो रहा है ना, तो मैंने unnecessarily depreciation charge कर दिया है. व्हीकल खरीदा नहीं नया, रिपेयर्स का अमाउंट व्हीकल में डाला और डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया उसमें, which is wrong. So I need to add back the depreciation that I had charged in this year. Alright? So here this 5,000, 50,000 का 10%. That is what is the excess depreciation I have charged. बाकी के vehicles पे जैसा depreciation होना था होना ही था. But this should not have happened. So I am adding back that 5,000. ठीक है? Obviously. This will also have effect on the next year.
नेक्स्ट ईयर भी व्हीकल पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा, बिकॉज मैंने ये करेक्शन किया नहीं अभी तक, राइट? सो नेक्स्ट ईयर ऑल्सो आई नीड टू ऐड बैक दिस 5000 डेप्रिसिएशन. ये अप्लाइड चीज थोड़ा समझना है, इसके बारे में कुछ नहीं बोला इस साल के बारे में, बट यू विल हैव टू अस्यूम एंड अंडरस्टैंड दैट अगर व्हीकल्स का डेप्रिसिएशन हो रहा है हर साल, तो इस साल भी हुआ होगा, इस साल भी 5000 ऐड बैक करना है. ओके, सो बोथ ईयर्स यू विल ऐड बैक डेप्रिसिएशन. ओपनिंग स्टॉक इन द ईयर 17-18, कौन सा ईयर है? 17-18. इस साल का ओपनिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय 15,000. 15,000 से ओवर वैल्यू हो गया, which is wrong. So now ओवर वैल्यू हो गया ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक इज माय एक्सपेंस. एक्सपेंस ज्यादा लिख के दे दिया मैंने, तो प्रॉफिट्स कम हो गया था, राइट? सो कम हो गया तो ऐड करो 15,000 ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक एडेड बैक टू द प्रॉफिट्स ऑफ दिस ईयर. ये जो स्टॉक है, ये ओपनिंग स्टॉक इस साल का है. The same stock was closing stock of the previous year. Again, this is applied. 16-17 का closing stock ही तो next year 17-18 का opening stock है, right? That is overvalued. So this year closing stock was overvalued. मतलब profit ज़्यादा हो गया, बढ़ गया, credit side का item है, right? So here we need to subtract this 15,000. Alright? Once we have put all the adjustments in all the places, we will try to find out the adjusted profit of each year. इस साल का 70 minus 10 minus 15, 45,000. 1 lakh plus 20 plus 15, 1,35,000. 55 minus है, minus further 50, तो 1 lakh 5 minus हो गया, plus 5 तो 1 lakh. 1 lakh लॉस है, अभी भी लॉस है, लॉस को ब्रैकेट में रखना. 1,45,000 plus 5,000, 1,50,000. So these are the four corrected figures of profit. अब आप इसमें जो एवरेजिंग करना है कर लो, राइट? एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है? टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये माइनस हो जाएगा ऑब्वियसली. नंबर बाय नंबर ऑफ ईयर्स. हाउ मेनी ईयर्स आर वी टेकिंग द एवरेज फॉर? 4 years. So 2,30,000, this plus this minus this and plus this, divide by 4 comes to 54,500. मतलब on an average देखा जाए तो firm का profit हर साल 57,500 हो रहा है. We have been told to value goodwill at 2 years purchase of average profit. मतलब ऐसा profit और next 2 years तक होगा ये assume करके 57,500 into 2. So that comes to 1,15,000 and that is the value of goodwill. Alright? So this is how we in the first step we find the adjusted profits by doing plus and minus of the various errors and omissions, and then average profit and goodwill. ये formulas लिखना जरूरी है step में, because all formulas will have marks. The simple formulas, simple sums, yes, and this is what is simple average profit all about. अब इसी sum को थोड़ा twist कर देते हैं. Okay, we will twist it and we will go to the next method, which is weighted average profits. Okay, so give me a minute and I will make the changes. Yo, I'm back. Now see, I have just changed one word in the sum. Okay, sum में मैंने क्या किया? Based on last 4 years, weighted average profits कर दिया. See, I just added one word, which is weighted average profits. Simple average था, भी weighted average होगा. Weights मतलब क्या? Importance. किस साल को हम ज्यादा importance दे रहे हैं, किस साल को हम कम importance दे रहे हैं, ठीक है? In some sums you will be given the weights कि इस साल का इतना weight है, इस साल का इतना weight, मतलब importance है, numbers में weight को दे रहे हैं, ठीक है? Now in some sums you will not be given the weights, तो मैं सिर्फ बोला गया weighted average और last 4 years का. So what we do is on an assumption कि latest year ज़्यादा important है, जैसे जैसे दूर होता जा रहा है years, पहले का years उतना कम importance है, right? Based on that assumption, I have given weights. Now बाकी सारा चीज same है. यहाँ तक कहाँ तक? Adjusted profit तक सब same है, right? So
Till here it's all fine, but after this we do not go on to find out the average. Instead of that, we first put the weights here. So you see, this is the, the farthest year. So that has got weight 1, 2, 3, 4. So 4 is the highest weight. 4 saal hai. So 1, 2, 3, 4. These are the weights that I have given to the profits. Okay. Giving most importance to the latest or recent year. Alright. Now, next step we find weighted average profits. This line, this one is the weighted average profits. What have we done here? We just multiplied these simple profits, the actual normal profits of this year, into the weights. This into 4, this into 3, 2 and 1. Now this is the weighted average profit, alright, of each year. Now we use this formula, weighted average profits निकालना, average निकालना है next. Total weighted profits, मतलब this plus this plus this plus this. These are the weighted profits. Total कर दिया by total of weights. Please be very careful. This is not divided by 4 number of years. यहाँ पे हमने weight से multiply किया है, so weight से ही divide करेंगे and the total of weights. Total of weights comes to what? 1 plus 2 plus 3 plus 4, that is 10. And this is the total of weighted profits. So my average weighted profits are 61,500. And I am multiplying that with the number of years of purchase, which was 2 as earlier. And I have found the goodwill as 1,23,000. Alright. So both the methods are very simple. You just need to correct the profits and take care of the formula. That's it. Okay. So making accounts more simplified. Keep watching my videos. Please press on the bell icon so that you get notified as soon as I update my next video. And please do subscribe if you haven't subscribed yet, and keep liking. Thank you for watching.